those who are slot is there na today. Yes. So all they have come. Okay. So anything which is to be explained. What is means of fire? Hmm? Fire. Bio concentration. About yes, the last lesson is left. I think. Sorry, I forgot. I thought this is the last lesson in that class. Already I have completed. Okay, no problem. So let us start with the next lesson. That is the air and water pollution, isn't it? That is there in that lesson only. Water pollution of air and water. So here in this lesson, mainly we come across the effects of what is first of all what is the air and water pollution, and most of the part also we have completed. Water pollution also and air pollution also. Some of the part we have also discussed in seventh class. Few part we have discussed in seventh class also. If you remember about the what was that marble cancer or because of the water, that is acid rain, doesn't it? That means we have discussed about the acid rain also. किया है कि नहीं? पता है ना acid rain क्या है? पता है? Can you tell me anybody what is acid rain? तो जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है सेवन्थ क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी. एसिड रेन अबाउट द change in the climate. In that lesson we have studied what is acid rain. Why both are sitting there? Test book. No, don't sit like that. Go to your place. No need to take your test books also. No, why you are taking the test books? If you are having other test book also, no problem. Okay, so because the lesson is the same, water and air pollution. Content also almost content थोड़ा different हो सकता है, but the concept of behind that is you have to study about the water and air pollution. That much. कहाँ जा रहा है? Lesson पता है? हाँ? Take the last lesson. एक पूरा पीरियड भर वही करते रहना फिर. Yes. Sorry, I am leaving the place again, and but because I have to be here only because it is online. So water and air pollution. So what was I asking is what is acid rain? Those who are online also can give the answer. What is acid rain? Yes, Vivek. क्या फॉसिल फ्यूल पता है मुझे. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बर्निंग होता है और क्या होगा? The first rain of the rain. हाँ? The first rain of the rain. First rain is acid rain. First rain is acid rain. फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो सब लोग फर्स्ट रेन है मतलब सब लोग घर में बंद होके बैठे रहेंगे. Yes. What is acid rain? हाँ. And it makes the soil acidic. I'm not asking the effect of acid rain. I'm asking what is acid rain. What is acid rain? No need to search in the test book. तेरा होगा कि नहीं पलटना? I'm getting disturbed because of that.
Okay. Sit down, all of you. So first of all, what is this? हाँ. ये क्या है? क्या है? हाँ, पकड़. ये क्या है? ये क्या है? S for ये. What is the symbol? Means this is the symbol according to the chemistry. So this symbol represents which element? Sulfur dioxide. This is sulfur. So it becomes sulfur dioxide. Understood? Sit down. Say loudly. Nitrogen. क्या है? Nitrogen dioxide. Understood? Sit down. So now nitrogen, sulfur. This is carbon. अच्छा ये nitrogen sulfur. What is the similarity between these three? कौन बताएगा? Tejasvi ने बताओ. Carbon, sulfur. What is the similarity? आद्या. Sai. Close your textbooks. Gaurav. Which one make it? Yes. What is the similarity? Anybody in the class? Anybody in the class? Nothing. No similarity. ऐसे उठा के डाल दिया है ना. साइंटिस्ट को ये तीन नाम बहुत पसंद है. डाल दिया नाइट्रोजन जादू बना एसिड रेन. चलो. I have given the clue just now. No. अच्छा एक और क्लू दूं क्या? What is the similarity? अभी आपको पता चलेगा. What is here the similarity? Yes, those who are online can give the answer. What is the similarity? Yes. No one. Sit down. Sit down. Okay. ये देने के बाद भी बल्ब नहीं जला तुम लोगों का? Yes. पूरा बुझ गया है क्या? पूरा दिमाग की बत्ती गुल है ना. ऐसे आके बैठोगे तो कैसे होगा? अभी तो तुम लोगों को बहुत करना है 1 महीने में. ऐसा मत सोचो कि अभी तो हो गया. Syllabus is over. Now next is our
Physical exam. Physical exam means so much you have to now cover up. Online students, they have given the answer. They have two oxygen, two oxygen, two oxygen. Okay. So now, जो हमारा point था, I asked you what is acid rain. So all these. अच्छा, who forms the acid rain? Who forms the acid rain? कोई भी आके form कर सकता है क्या acid rain? पर्टिकुलर एलिमेंट्स चाहिए ना, कौन से एलिमेंट्स चाहिए? हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नाइट्रोजन ही क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों, या नाइट्रोजन कार्बन सल्फर ही क्यों? Because yes, एसिड फॉर्म करने के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए? कुछ याद आया? कुछ याद आया? Non-metals, when they dissolve in water, they give acid. I'm not talking about rain. And metals, when they dissolve in water, they give कुछ याद आया? कहाँ मैडम, ये तो कौन सा लेसन है? फोर्थ लेसन है, अभी तो हम लास्ट लेसन में पहुंच गए हैं, है ना? कुछ याद आया क्या? Is it clear? These are non-metals. Nitrogen, even hydrogen, oxygen, जो भी है, these are all non-metals. Non-metals, when they combine with water, they give acids. Non-metals, when they combine with water, they give acids. Metals, when they combine with water, they give bases. मेटल और ऑक्सीजन क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल और ऑक्सीजन क्या बनता है? नॉन मेटल ऑक्साइड. ऑक्साइड्स आर ऑलरेडी देयर, दे हैव फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग. जब भी कंबशन होता है, एंड मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द non-metals, or when we are talking about the fossil fuels. Now, fossil fuels, if we talk about fossil fuels, these fossil fuels after burning, their main product which is released is carbon dioxide. इसीलिए जब भी हम कोयला जलाते हैं या हमारा गुड़ जलाते हैं तो बहुत धुआं होता है, और वो भी काला धुआं होता है, घरों में हो या कहीं पर भी, और ज्यादा से ज्यादा एमिशन होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अदर गैसेस आर आल्सो देयर, and when we talk about other gases, because they contain sulfur also, nitrogen also, so they also give nitrogen and sulfur dioxide. And when these gases are emitted in a large quantity, factories में से निकलता है धुआं, because power plants में से, क्योंकि power plant is nothing but, for example, अगर thermal power plant है वहाँ पर तो कोयला ही कोयला जलता है, तो वो तो कितना सारा smoke देता है. This smoke is nothing but again the carbon dioxide. So air is completely polluted. We are not talking about the air pollution now, we are talking about the acid rain. All these gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, is released into the atmosphere. Here they mix with the
water vapors, because atmosphere contains water vapors. And during rainy season also, most of the time, the atmosphere is full of humidity. रेनी सीजन के समय में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, वाटर वेपर्स ज्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड दे गेट मिक्स्ड विद द वाटर वेपर्स, and when they mix with the water vapors they form the acid only, and then they fall as a rain, and that is called as the acid rain. और वो भी जब पहले पहले जब बारिश हो जाती है then it is more concentrated. Understood? Because they get mixed with water. फिर जब cloud formation होता है तो उतना नहीं होता है जितना पहले रहता है, and then the water is somewhat diluted. So this is how the acid rain is formed. So now have you understood? Acid means one element is always क्या है? Say loudly. Non-metals. Acid means the combination of water and non-metal. कोई भी acid हो. Understood? And base is always the combination of metal and water. Understood now? Yes, ma'am. Yes, madam. समझ में तो आ गया. मुझे याद था मैडम, लेकिन मैं टाइम पे भूल गया, है ना? मुझे याद था, कहीं तो पढ़ा था. So this is acid rain. Now this is one of the part and most important again, because nowadays we have seen that pollution is also increased, but the amount of acid rain is increasing day by day, because there is more emission of these gases, more emission of gases due to the fossil fuels. फॉसिल फ्यूल सिर्फ यही नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स मींस हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये भी होता है. और हर एक के घर में कार है, हर एक की कार चल रही है, हर एक कार से स्मोक एमिट हो रहा है, और ये स्मोक इट कंटेन्स large amount of sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Understood? Harmful gases, and they also get mixed with these clouds for forming the acid rain. Understood now? This is how it leads to the acid rain. Mainly हम acid rain में केस स्टडी करेंगे हमारे ताजमहल की, क्योंकि ताजमहल जो व्हाइट एंड व्हाइट था अभी नहीं है. इट इज द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो सबसे पुराना मॉन्यूमेंट, जो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वंडर हेरिटेज, क्योंकि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट है, बट दिन ब दिन वो इट इज गेटिंग डल, इट इज गेटिंग कन्वर्ट येलोइश, पेल येलो कलर में कन्वर्ट होते जा रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर नेम इज देयर, मार्बल कैंसर. कैंसर यानी हमें जो होता है कैंसर ह्यूमन बॉडी को, वैसे नहीं. कैंसर इन द सेंस एसिड रेन, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ द एसिड रेन. क्योंकि मथुरा में जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वो पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एयर, ऑल द एयर इज गेटिंग डायरेक्टेड टुवर्ड द आगरा, और ये पूरा जो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज गेटिंग डाइवर्टेड देयर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर, और ये जाके वहां पर आगरा में फिर फॉर्म हो रहे हैं क्लाउड्स, एंड दे आर गिविंग द रेन दैट इज कॉल्ड एज द एसिड रेन. बिकॉज ऑफ दैट आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो है इट इज सफरिंग. अभी वो उतना वाइट नहीं रहा है, और दिन ब दिन उसका जो ब्यूटी है वो कम होते जा रही है. Understood now? This was the acid rain. Okay, what is acid rain and the effects also I have told you. So
I have just asked you what is acid rain. Have you understood, students? समझ में आया? Who did not understand? हाँ, marble is getting changed means see, marble is quick line का ही एक what we can say एक product है. तो लाइन जो है जैसे ही हम एसिड में डालते हैं डिसॉल्व हो जाता है. आपने बहुत बार देखा होगा हमारे फ्लोर पर जब एसिड गिरता है तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, फिर वहां पर वो पूरा ब्लैक हो जाता है, मतलब जो कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है. सो दिस इट इज गेटिंग अफेक्टेड. जो हमारा वो जो पत्थर है जो जिसे हम मार्बल कहते हैं, दैट इज डिग्रेडिंग, dissolving due to the acid rain. समझ में आ रहा है? पहले जैसा वो ब्यूटीफुल नहीं रहा है. Beauty is also getting disturbed. Okay? Is it clear? So this was about the acid rain. Now, what is given there? First one. First we are starting with the air or with the water. Air pollution. Air pollution है. Okay. So air pollution. Now, in this, first of all, so in air and water pollution, the first one is the air pollution. So, air pollution, what do you think? What might be the causes of air pollution? Very simple question. What might be the causes for air pollution? So first we will discuss. Now, what is the definition of air pollution? Causes तो बाद में. First of all, tell me what is the definition of air pollution? Who will tell? No one. रीड करके भी नहीं आ गए, है ना? अभी रीडिंग कर रहे हो, अभी थोड़ा सा हाथ में ले रहे हो. कल तो टाइम ही नहीं मिला मैडम, है ना? We were preparing to come to school, है ना? क्या कल बैग नहीं मिल रही थी, तो कल मेरा ड्रेस नहीं मिल रहा था, मेरा यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा था, मेरा बेल्ट नहीं मिल रहा था, ये नहीं ढूंढने में ही समय चला गया. Reading is important. Tomorrow, those who are coming, remember that students, you should read the lesson and come. And those who are sitting here also read the lesson and come. Whether it is tomorrow or day after tomorrow, I want everyone to read the lesson and then only come and sit on the bench. ऐसे देखना नहीं मुझे. सब पूरा ब्लैंक हो जाते हो तुम लोग, वापस से पढ़ाना पड़ेगा. These are very simple lessons. Once you will read, you will know what is there in the chapter, what terms are actually there in the lesson. Simple. Whenever you are reading the lesson, when we are taking those topics, and if you are reading at home, if you once go and read, 50% of your work is over. Remember this. No need to mug up it again and again. Once the topic is taught here, you go to home, just read it. I told you 50% of your work is over. So if you want to reduce your workload, do read everyone. Is it clear? क्या विनय समझ में आया? क्या बताया मैंने? क्या बताया अभी?
Stand up. Padna means? Sit down. So what is air pollution? Who will tell? Air pollution is the pollution in air. Very good. The air gets polluted, the quality of air degrades. Just I am writing the terms. Air gets polluted, or you can write down air gets contaminated or degraded. The quality of air gets polluted, the air gets polluted or it is getting contaminated. जो प्यूरिटी है एयर की वो नहीं रहती है, या तो उसमें कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज कंटामिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन. Now, why it is getting polluted? Due to the mixing of the pollutants. Now this is noun. This is verb. Pollutants. What are the pollutants? The elements that contaminate, that pollute the air. समझ में आ गया? For example, sulfur dioxide. Sulfur dioxide is a pollutant that pollutes the air, or it is called as contaminant. Understood now? Clear? If we are mixing something in water, for example, I am mixing sugar in water. Now, sugar is a, here, for example, I am giving you, sugar is a contaminant. Sugar is a pollutant. Another element that mixes, that makes the water or the air polluted. Understood? So, the pollutants that mixes in the air are called as, the pollutant that mixes in the air pollutes the air. Okay? Or the contaminants which are mixed in the air makes the air contaminated. It makes the air contaminated. Understood? Contaminants are mixed, that is why the air is contaminated. Is it clear to all? That is why the air is impure, you can say, polluted, you can say like this, likewise. Okay? So, this thing is clear to you? Everything is clear? So, contaminants या pollutants जो है, these are the things, the elements that makes that particular thing polluted. For example, air है, so air gets polluted due to the pollutants. Water gets polluted due to the pollutants. समझ में आ गया? हाँ, कपिल सो रहा है? तू सामने बैठ के ना नीचे मत देखा कर, या तो तू सबसे पीछे बैठ. अगर तुझे नीचे देखना है तो पीछे बैठ, वो साई को इधर आने दे, एटलीस्ट उसको फायदा होगा. समझ में आ रहा है? So this is regarding the air pollution. Now next, how does the air gets polluted? Now, how does the air gets polluted? कोई बता सकता है?
पोल्यूटेंट्स हमने पढ़ लिया. पोल्यूटेंट्स है जो एयर को पोल्यूट बनाते हैं. नाउ फ्रॉम वेयर डू दिस पोल्यूटेंट्स दे जनरेट? बहुत सारे उसके सोर्सेज है. फैक्ट्रीज है, फिर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, है ना, power plants. So these are all the sources of the pollution, air pollution mainly. Is it clear? फिर घरों में भी जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, तो होम फ्रॉम आवर होम्स आल्सो, फ्रॉम आवर हाउसेस. Is it clear? So in most of the villages mainly, they don't use this cooking gas. They use only the wood. Is it clear? So it creates a lot of pollution. So here also few examples are given in your textbook. So smoke from a factory. Even our cement factory also releases a lot of smoke. If you see, isn't it? So it is also responsible for the air pollution. So सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, फैक्ट्री के साथ हमारा पावर प्लांट भी है. पावर प्लांट में तो सबसे ज्यादा और स्मोक निकलता है, because here the coal is burned. Coal is burned and it is burnt for getting the steam, and steam is converted into electricity. बहुत सारा स्मोक पोल्यूशन में. Okay, also these are all man-made pollutants, like the pollutants which are releasing from the factories or the houses or the power plants, etc. Now, some of the pollutants are also released in nature. So some are natural also. So it is divided into two types: man-made and natural. Natural, it is not continuously or it is not always seen, but sometimes might be due to the volcanic eruption. वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखा होगा, बहुत जब लावा निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत पूरा स्मोक हो जाता है वो एरिया में. इट इज कवर्ड, इट इज लैडन, स्मोक लैडन पूरा. So again, forest fire, and nowadays this is very common. Forest fire अभी भी चल रही है वहाँ न्यूयॉर्क के पास. तो बहुत सारी जगह पे हमारे इंडिया में ही नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, बट वहाँ पर जहाँ बहुत घने घने मोस्टली डेसिडियस नहीं, लेकिन कॉनिफेरस फॉरेस्ट जहाँ पर है, चलती रहती है कितने महीने तक. बहुत सारा एरिया उनको खाली भी करना पड़ता है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत सारा एरिया क्लीन हो जाता है. So this is also one of the disaster भी हम बोल सकते हैं, और एक कैलामिटी भी बोल सकते हैं. तो धीरे धीरे ये जंगल साफ होते जा रहे हैं. जंगल साफ होंगे तो एक दिन अर्थ भी चला जाएगा, ऐसे ही करते करते. क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारे आएंगे, है ना. So when we discuss about air pollution, so man-made pollutants like which are released from the factories and the companies, factories, yeah, houses, fossil fuels, then vehicles. And when we discuss about the natural one, so natural air pollutants are, that is volcanic eruption हो गया, forest fire हो गया, और कभी dust due to the cyclone. Just wait, student. I am sending the attendance link to you.